Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surely we belong to Allah, and verily to Allah we return. The only guarantee in life and on our fate, in fact, is death itself. However, this eventual, inevitable reality is the one we are never ever prepared for, whether it be our own, but especially if it is that of a loved one. Assalamu alaikum, everyone. I am your host, Beenish, and today we will discuss and talk about this inevitable reality and how three very beautiful women, very strong women, dealt with it. I remember the first time I heard the phrase, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I was about 9 years old, and the phone had rung in the middle of the night, and as my room was the closest to the family room where the phone sat, I was the first one in my family to get up out of bed and pick it up. On the other end, my uncle, my Taya Jan, uttered these words, followed by, Your Dadu Ami has went back to Allah. Give the phone to your father. At 9, I obviously did not know the sorrow that was to follow and the deep pain my father must have felt being so far away from home and his mother at such a time. I vaguely remember him trying to get a flight and return to Pakistan immediately, but to no avail. He managed to go there by the 40th day subsequent to her demise. Living in these United States, one is left to such circumstances, not only not being able to be at the time of death, but sometimes even after the last rites and memorial themselves. And then there are those that might not face these trials due to distance from the deceased, but in fact, in the lack of other loved ones who may help them not only during this burial and memorial process of the death of a loved one here, but even with the coping with the emptiness that surely takes over after they have lost that loved one. This is one of the most difficult times anyone can ever go through. And in the West, or anywhere far from home and familial bonds, many people face this adversity alone. As I said, today we speak to three such women who suffered these great losses and went through this depravity in different ways and specific to their own individual loss. Please help me welcome Dolly Khalid, Madiha Naz, and Nuzhat Iqbal. Welcome, everyone. Thank you. Okay, so let's start off with what exactly happened. Let's start with Dolly. So, Dolly, what happened? Who did you lose? Please tell us your experience. So I will tell about myself. My name is Dolly Khalid, and I live in York, PA. By professional, I am an operation and risk manager in a bank, and mashallah, blessed with two beautiful kids and a wonderful husband. So in 2021, I lost my father, and he was in Pakistan. I couldn't see him because of COVID, and that time I was unvaccinated too, and my kid did not allow me to travel. And dealing with your loss from far is very difficult and tough too. And I was in because I FaceTimed him in the morning. We chat for a long time. He was talking and telling me about the stuff and this. And he was perfectly fine. And then after a few hours, I heard that he left me. He passed away. So it was unbelievable. So that was my major loss. मेरी जैसे जिंदगी का एक जो ना हिस्सा खत्म हो गया, मेरा चैप्टर खत्म हो गया है, मेरी प्रेयर्स खत्म हो गई हैं। जैसे एकदम ऐसे लगा जैसे आगे क्या करूंगी मैं, कैसे मैं सरवाइव करूंगी. So that was a big loss for me, 2021, losing father. You are muted. I'm so sorry. Thank you. So I'm so sorry that you suffered such a loss, especially during COVID. I think everybody was going through so many difficulties, and to have, be so far away, and with COVID deaths in general were so difficult, even in these United States and in Pakistan. I heard such tragic tales, so I can imagine what you must have gone through. Yeah. Madiha, please do tell us your loss. Thank you so much. I'm so sorry about you listening to your father's story. That was really hard, I'm sure. Yeah. Um, my name is Madiha Naz. Most of you probably know me already. I have four beautiful kids, mashallah. Um,
In 2021, I lost my newborn baby who was only 20 days old. He was lost through SIDS. It was it was all of a sudden because he was a perfectly fine baby, like any other baby. But on the 18th day of his life, he did not wake up. It was 7:30 in the morning on Saturday when I tried to wake him up to feed, but he was unresponsive. I woke my husband up. He tried the CPR while I called the 911. With fear running down my veins, I wondered to myself what will happen next. Within minutes, the first guy came along, followed the rest of the crew. Thankfully, we live in a very privileged country where the help is readily available, and all those people have tried their level best to revive the heartbeat of the baby. Even though it took a while, but it was successful. At that very moment, I was able to see a ray of hope shining through the fear. They immediately took him to the emergency department and instructed us to follow in our own vehicle. We were surprised and worried we wouldn't be able to ride with the baby. Again, I felt the hope die out as the time was ticking. Not only was this experience scary, but it was confusing too. They had so many different fully equipped vehicles. Certainly, we could fit in one to go along with them. But that wasn't the case. Anyhow, I went to the emergency department with my husband because I needed him to be with me for all those important decisions we might have to make. But we had to request our neighbor to take care of our other kids while we can go to the hospital. It was really hard time and we were just panicking and nothing else. At the emergency department, they already knew the scenario and they've been very supportive and understanding to us. Without even asking us any questions about insurance or registration, they have just opened the emergency doors and let us go walk through to the baby's room. At that time, we have let our family and close friends knew about the situation and asked them to do the prayers and do Jaan Ka Sadka back in Pakistan. The staff there gave us tremendous amount of help and support. Somebody got us the water, somebody was getting the chairs to sit near the baby, which was a good thing because normally they tell us that baby is very small, you cannot stay with him and all that, but in this scenario they have all encouraged us to stay near the baby as much as possible. But it was so hard to see him lying down in his incubator on life support, especially when his vitals were not even stable. Since the emergency department was not specialized in children's treatment, so their next move was to put him in on a helicopter and fly him to the hospital where where the where they are specialized in children treatment and everything. So he could get the treatment and testing done there. Sorry, I'm just like losing it. It's so hard to remember all those things. But at that time, I remember something which I cannot forget. The head nurse, who was really kind and spoken, I still remember all the moments. She had flashed some light in the baby's eyes and shook her head to her colleagues as she is saying no. And those gestures of her made me realize that something really wrong happened to the baby. He is not even able to move his pupils. It was not okay. And as a mother, that was the most upsetting thing to have to see your baby like this. But still, I had gathered all the strength to accept the reality of the situation and stayed calm. The next step was as soon as they have got the vitals stabilized for the baby, they have taken him to the specialized children hospital. They have started their own process of doing different type of testing, everything while keeping him on life support. They were kept checking the vitals and performed the MRI, which was the major test was needed at that time because his brain was damaged. On the third day of the MRI results came, and the panel of doctors explained to us how there is no point in keeping him on the life support anymore because his body may go through organ failure or cardiac arrest at any time. That evening, he passed away peacefully in our arms on the 20th day of his life. I still get goosebumps thinking about all those and reading it and like telling it. It was is the most hardest thing which I never did until now. But today, I think it was time to let people know what happened.
So certainly, I think बच्चे जो होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इंसान की औलाद होती है ना, तो उस वक़्त इंसान को मोहब्बत के मीनिंग समझ आते हैं, हर लिहाज से। बिल्कुल एंड आपको अपने माँ-बाप के सैक्रिफाइस इन रेफरेंस टू यू डॉली, आपको उस वक़्त आपकी उनकी एप्रिसिएशन भी तब भी आपको पता चलती है कि माय गॉड, दिस इज़ हाउ मच माय पेरेंट्स लव मी, हाउ मच आई लव माय चाइल्ड। उनको हम मोर अप्रिशिएट करते हैं कि एग्ज़ैक्टली, what we are doing for our kids, they must have done for us too. एग्ज़ैक्टली। So ट्रू to suffer such a loss, I not only can I not imagine, I don't want to imagine because I feel like there's no, वे वी it's कैन थिंक not. And before we discuss more about this, please, Nuzhat, tell us of another great loss, one that जिसके बहुत ज़्यादा दुनियावी असर काफ़ी अरसे तक रहते हैं, even beyond. Please tell us your story. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले थैंक यू सो मच सिस्टर अमरीन गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर अटेंड फॉर दिस वेबिनार लॉस एंड सर्वाइवल जो आज हमारा टॉपिक है वाकई में इस वेरी हार्ट ब्रेकिंग मतलब के टॉपिक है एक तरीके से कि आप ये चीज़ कभी भूल नहीं सकते, ये हमेशा आपके साथ ही रहता है। सो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस अपने आप को मैं ऐसे करवाऊंगी कि आई एम नुज़त इकबाल, नुज़त अहमद। अहमद मेरे फादर का नाम है एंड इकबाल हस्बैंड का। एंड आई एम सिंगल वर्किंग मदर एंड 3 यंग चिल्ड्रंस एंड आई यूज्ड टू वर्क एट like as a manager for known wealth management firm and right now I'm live in short break. It's in during the loss my husband is he's a very heartbreaking feeling every time जब मैं सोचती हूँ ये सब चीज़ें सो एकदम ही वो सब चीज़ें दोबारा से मेरे सामने आ जाती है। तो उनके बारे में मैं इतना कहूँगी कि my husband Iqbal Said was self-made successful individual in business who's owned a couple of business for Domino's and is we carry for 2 beautiful houses in this area and both is our families is in Pakistan that time or right now also or that time is we had the 3 young babies and living in very happy life. हम सोच नहीं सकते थे कि कुछ ऐसा हो सकता है इस वेरी यंग एज में क्योंकि ओनली 38 इयर्स ओल्ड थे वो जब उनका ऐसा हुआ। सो मैं अभी भी जब वो चीज़ें सोचती हूँ तो लाइक काँपना शुरू हो जाती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट यही कहूँगी कि अबाउट इस 14 years ago I lost my husband and he is a severe is heart attack and brain hemorrhage and उस टाइम में एकदम ब्रेन हेमरेज होना शॉक्ड उस वक्त था कि इतनी यंग एज में ब्रेन हेमरेज होना या फिर हार्ट अटैक होना इस सो सर एक दिन पहले हमारे घर पे ईद की सेलिब्रेशन थी सो 60 पीपल इज दैट टाइम इज इन माय हाउस और वहाँ पे सब अच्छे से बातचीत खाना पीना सब कुछ हो रहा है एंड देन मेरी फ्रेंड जो है एक तो लाइक डॉक्टर है एंड दूसरी जो थी उनके हस्बैंड डॉक्टर थे तो सब आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे यार रेफर कर दो कि मैं कहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ बैक प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम। उस वक्त आई बिलीव मेरे हस्बैंड को दैट टाइम जो है उनको फीलिंग्स आ रही थी हार्ट अटैक की बट वो कुछ शेयर नहीं कर रहे थे। उनके राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा था सब कुछ कर रहा था। सो उन्होंने जो है बस लाइक उस वक्त उन्होंने सोचा कि फैमिली चले जाए सब चले जाए तो देन मैं अपनी वाइफ से कहूँगा। तो हम लोग बैठ के हमने रात में डिनर किया जाने के बाद एंड देन सडनली जो है सोने के बाद मिडल नाइट में वो उठ के कहते मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। मैं इसको उर्दू में ज़रा इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा और उसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ क्योंकि जब जो चीज़ें एकदम दिल से तो वो That's fine. आपको जो मुनासिब लगता है मुझे पता है कि
कुछ चीज़ें आप अपनी ज़ुबान में ही एक्सप्रेस कर सकती हैं यकीनन, तो प्लीज़ आप जो ज़्यादा बेहतर फ़ील करती हैं। सो उनका ये था कि बस किसी को ना हार्ड टाइम नहीं दे सकते, किसी के लिए कुछ सोच नहीं सकते, अपने ऊपर सारी तकलीफ ले लेते थे। सो उन्होंने बस ये कहा कि ओके नहीं, मुझे पेन हो रहा है, तो मैंने कहा हॉस्पिटल चलते हैं, तो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, और जो है सुबह मैं देखूंगा। तो मैंने कहा ओके, एंड डोमिनोज को ऑन करते थे उस वक्त, तो उन्होंने जो है कहा कि मैं स्कूल लंच करके आता हूँ, फिर मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनाता हूँ। जुम्मे का दिन था, मुबारक दिन था। सो और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये आदत है कि 5 वक्त के नमाजी भी थे माशाल्लाह से। और अपने डोमिनोज में भी उन्होंने एक ऐसा सेक्शन बनाया हुआ था कि जब भी किसी को नमाज पढ़ना हो, डोंट वरी अबाउट द वर्क, सीधा पहले वो टाइम आप नमाज के लिए दो, एंड देन उसके बाद सारे काम होंगे। तो वो चीज़ सबको वो बहुत अच्छी लगती थी कि इतनी यंग एज में नमाजी भी होना और फिर दूसरों को एडवाइस भी करना कि अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। सो सडनली जो है उनका वो घर आए, आके मुझे कहते हैं कि ना मुझे पेन हो रहा है, मगर मैं जो हूँ जुम्मे की नमाज के लिए जाता हूँ, देन मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। मैंने कहा पहले सबसे पहले आपको पेन हो रहा, आप हॉस्पिटल जाओ। कहते अच्छा मैं जाता हूँ, एंड बाथरूम यूज़ करने गए, एंड उसके बाद ही जो है मैंने कहा कौन जा रहा है आपके पास डॉक्टर के पास, तो कहते हैं कि मेरे दोस्त जा रहे हैं। मैंने कहा दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा अजमत आप जा रहे हैं? कहते नहीं भाभी मैं तो नहीं जा रहा, मुझे कोई कॉल तो आई है, मगर मैंने अभी मैसेज नहीं सुना है, मगर मैं कॉल कर, आप देखो को। मैं बस ये बात करके गई, नॉक किया, मैंने कहा बस आप निकलें जल्दी डॉक्टर के पास चलें। तो एकदम कहते हैं कि ना बाथरूम का दरवाजा खोलो तो आधे कमोड पे, आधे नीचे गिरे हुए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इनकी जान ना इनकी तीनों बच्चों में बसती थी। जब वो अंदर आए ड्राइवे से, तो इस्लामिक स्कूल में लामी और मेरा छोटा बेटा था, और मजला वाला प्राइवेट स्कूल जाता था, तो उसको उन्होंने आके तीनों बच्चों को हक दिया और कहते मम्मा का ख्याल रखना। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते उसको बस में बिठा दो, उसकी बस आ गई। एंड देन उसके बाद वो अंदर घर में गए, वो दोनों बच्चे मेरे साथ अंदर आ गए, मजला बेटा वो चले गया स्कूल। एंड देन उसके बाद उनको बस जैसे मैंने देखा, मैंने 911 को कॉल किया, तो एम्बुलेंस आने में टाइम लगी, हालांकि ओल्ड ब्रिज का हॉस्पिटल बिल्कुल करीब था। एंड देन उसके बाद मेरे पुलिस वाले के साथ मैंने बाहर निकाला उनको, उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉट दिए, सब कुछ दिए। एंड देन जैसे ही एम्बुलेंस आई उनको लेके गए एंड हॉस्पिटल में एडमिट किया। पूरा दिन रात निकल गया, एंड मैंने अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। राइट अवे मेरे फ्रेंड्स आ गए। दोस्तें जो होते हैं ना, अल्लाह ताला की नेमत है। बिल्कुल। जब आपका कोई यहाँ ना हो और आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो, वो बहुत बड़ी जो है आपके लिए नेमत है। तो उस वक्त मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया, और वो लोग बच्चों को लेके गए, उनके हस्बैंड हॉस्पिटल पहुंच गए। बस डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो इज नो मोर। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अभी कल ही तो हमारे साथ थे, अभी तो हमारे साथ थे, ऐसे कैसे नो मोर? मैंने कहा नहीं, इनको उठना ही है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं अपने हस्बैंड को आईसीयू में जाके उनको मार रही हूँ। मैंने कहा उठो, आपको पता ही आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं, आप उठ के बैठो, ऐसे कैसे हो सकता है? देन पता चला वो कोमा में चले गए। 9 महीने कोमा में रहे, और जब कोमा से बाहर आए तो किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे थे। वो टाइम ऐसा था कि लग रहा था दुनिया खत्म, कि कुछ भी नहीं रहा, समझे। फैमिली नहीं यहाँ पे, दोस्तें थी यहाँ पे, मेरी नंद की नंद होती यहाँ पे अफीफा और शगुफ्ता बाजी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया। देन उसके बाद जब उनको होश आया, तो वही बात है कि डॉक्टर्स ने कहा कि ना होने के बराबर है ये, आप इनको घर नहीं ले जा सकते, इनको नर्सिंग होम में मूव करिए। बच्चे आपके घर में छोटे, कोई उनके ऊपर जम ना कर दे, उनकी फीडिंग ट्यूब लगी हुई है। सो मतलब मेरी जिंदगी एकदम ही 10 साल का मेरा उनके साथ रहा। हालांकि मेरे कज़न थे, खालाजाद थे मेरे, 10 साल का हमारा जो रिश्ता रहा वो आज भी उनके साथ मैं निभा रही हूँ। बट 2010 में उनकी डेथ हुई। सो उस वक्त मेरा छोटा वाला 2.5 साल का था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। So
पता है सिस्टर अमरीन, जब कहते हैं ना कि हम फिल्मों में देखते थे कि कोई कॉमा में चले गया तो एक उम्मीद होती थी कि वापस आएंगे, हाँ, राइट? फिल्मों में, ड्रामों में हम लोग यही सोचते कि वो वापस आएंगे और बस ये अभी उठ जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं अल्लाह ताला से यही बोलती थी कि मेरे साथ ही क्यों। हम्म, उस वक़्त मैं भी उनसे तकरीबन 9 साल छोटी थी, बहुत यंग थी मैं उस वक़्त, तो मैं यही कहती थी कि मेरे साथ ही क्यों? मुझे आज तक ये चीज़ अब जाके समझ में आता है कि अल्लाह ताला क्यों चूज़ करता है अपने लोगों को, कि वो शायद इस चीज़ से बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब मेरी तो दुआ ये होती है अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे। सबके सुहागों को, सबके उनके ऊपर सलामत रखें ऑलवेज़। पहले हम चले जाएँ मगर हाँ, सब कोई सलामत रहे। I think so. आपका लॉस मैं स्पेशली मैंने द वे आई वाज अरेंजिंग इट, मैं स्पेसिफिकली आपका लॉस मैंने एंड में मैं चाहती थी कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें हमारे साथ, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट थिंग्स आई फेल्ट इन माय ओन फैमिली। मेरी बहुत क्लोज रिश्तेदार, उनके हस्बैंड सेम, जैसे आपका आपने बताया पोस्ट कोविड के एक I can't get into because I think politically I might not be able to be okay to say it, but unka basically sudden heart attack hua and he had no preconceived conditions, और इसी तरह like within 3 हफ्ते वो फौत हो गए। So or and on top of that I feel like, and so I'm still, I'm not even like, I'm not his, like मैं उनकी बहन हूँ basically, um उनकी भाई की बीवी actually, and because of that reason I felt her loss, but I could not even imagine the magnitude that she felt. And so I know that your loss, I'm feeling it still, the ramifications will काफ़ी इंसान socially affect होता है इस loss से, like अपने friend circle में, अपनी community में, like हम I think as women हम realize नहीं करते कितनी चीज़ें attach होती हैं इस रिश्ते के साथ, and that's why I wanted to keep it for the last story to be told, because I wanted everybody to understand that एक हर लॉस का एक लेवल है, एक effect है, and I feel like the loss of a spouse, it has a very long term effect. I think every loss has a very long term effect, but spouse can affect you 20, 30 years out, especially जब बहुत young age में lose किया हो. So going back to Dolly, आप अपने obviously मदीहा and नुज़हत जी ने उन्होंने इधर डील किया अपने लॉस, लव वन के लॉस। आप इधर कैसे मतलब इतना दूर अपने अब्बू से होके, और उनका अक्सर हमारे कल्चर में कहते हैं आखिरी चेहरा देखा, आपने कैसे अपने आप को, मतलब व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस इमीडिएटली, हाउ डिड यू, आप कैसे, मैं नहीं कह सकती कि निकल सकी, बट हाउ डू यू गो ऑन आफ्टर सच अ थिंग? very tough. आपको पता है grief is a natural response to your loss and pain. And it's a mixture feeling of different stuff. My feeling is mixture of sadness, emotional, or depressed. But worst thing was the angerness. I was so angry all the time because मेरा ख्याल है मैं उनको देख नहीं सकती थी, मैं जा नहीं सकती थी because of COVID, or it was affecting my home and my work too, both thing. And कुछ जैसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं. Suppressing your feeling and be pretending that you are brave doesn't work. Absolutely. आप लोगों को हमें बताना चाहिए कि मेरे दिल में क्या है. My kids help me a lot. They talk to me about my dad positive stuff and about his life, and what should I do. And they say, you want to go Pakistan? I say yes, and then say, okay, let's get vaccination and then you will be going. फिर मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह 2022 में I went to Pakistan. I went to his grave, and मैं उनकी ग्रेव पे गई. पहले तो पूरी फैमिली के साथ गई, तो मैंने वही ना कि मैंने अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रखा हुआ था, मैं नहीं रो सकी. वो जब चले गए तो मैं फिर अकेली, मैंने उन सबको कहा कि आई वांट टू सिट डाउन अलोन. सो मैं अकेली बैठी, एंड आई वाज द यंगेस्ट डॉटर टू. सो आई सैट डाउन देयर, आई रेड कुरान. मैंने उनके साथ बातें की, जैसे मैं ये मेरे सामने बैठे हुए, मैंने उनके साथ बातें की.
फिर वो जैसे नहीं, जैसे एक सुकून सा आ जाता है, एक क्लियरनेस आनी शुरू होगी मेरी बातों में। फिर दिस वाज लाइक, यही चीज़ मेरे अंदर आ रही थी कि मैं जूं-जूं उनसे बात कर रही हूँ, वो बैठ के वो मेरे अंदर मोर क्लियर होता जा रहा है, मोर अंदर मेरे क्लियरनेस आती जा रही है। एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। और फिर उसके बाद मैंने जो वापस जब मैं आई तो मेरी जो सबसे अच्छी मैंने बात की, आई स्टार्ट राइटिंग। इन राइटिंग मैंने अपनी फीलिंग को ना एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मेरे डैड सामने बैठे हुए हैं, एंड देन आई एम स्टार्ट राइटिंग। आई क्राइड अलोन, starting going to the gym, seeing my friends more often, you know। और इंशाल्लाह इससे मेरा, और मैंने ना कुरान को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो होता था ना कि जुम्मे को पढ़ लिया, एंड देन यू नो कोई हुआ ख़ास मौका हुआ तो मैंने थोड़ा-थोड़ा ना पढ़ना शुरू कर दिया। Started reading Quran more often, and उसने मुझे more peace दिया, and then after that I felt a lot better. So, you know, of course, I'm still in that phase, missing him so much. But ये 2-3 चीज़ें करने से काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी सुकून मिला। So, mashallah, he's very lucky to have a daughter like you. Mashallah, this is, I think one of the I think things we forget, that it is through us that our parents' legacy lives on, and not only in how we are as individuals, मगर जो हम दुआ करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हमारा दीन हमें सिखाता है कि जो हम अच्छाइयाँ करते हैं उससे एक वाहिद सदका जारिया कुछ चीज़ों में आता है, और ये एक एक्चुअली सदका जारिया में आता है। सुभान बिल्कुल, अल्लाह। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रही हैं। very lucky to have a daughter like you, जो उनकी मग़फ़िरत के अलावा भी अच्छाइयाँ और मज़ीद कर रहे हो। Like, I think always remember that, and I can feel your pain in such a way. Like I can tell you this. So I lost my dad when I was very young, and one of the things I will say that I definitely agree with you. You don't ever forget, and when people say, "Have you gotten over it?" No, you don't always get No, over that. that's I not. think it comes back. It's come back हर जगह पर। जब आपको, like for example, जब आप कुछ बहुत अच्छा होता है आपकी लाइफ में, या जब बहुत कुछ बुरा होता है आपकी लाइफ में, लाइक तब एंड एज डॉटर्स आई थिंक हम रियलाइज नहीं करते कि कितना असर है हमारे बाप का होना हमारी जिंदगी के ऊपर, बहुत आप ना छोटी-छोटी जो आपकी खुशियाँ होती हैं, जस्ट लाइक यू नो, in this start of 2023, I was awarded a top performer from my bank, and you know, मुझे ऐसे लगा कि मैं आई हूँ घर तो कि मैंने अब सबसे पहले किसको बताना, एंड देन उनका नाम सबसे पहले आया। तो मैंने कहा कि मैं हमेशा अपनी पहली जो थी ना, हमेशा शेयर, आई यूज्ड टू शेयर विद माय डैड, you know। But then I called my brother, he's an older brother, and he has still my dad phone. And मैं अभी तक उनसे बात करती हूँ, I dial on my अबू जान phone. And मैंने उनसे बात की, and then उनको बताया, उन्होंने वो सेम, उन्होंने भी ब्लेसिंग वैसे दी, लेकिन still it was missing something. So हमारे मेरा दिन उनसे शुरू होता था, रात उनसे छोटी-छोटी बात उनसे डिस्कस करना, ये करना कि इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। But you know, you learn। और मेरी जो स्पोर्ट है, मेरी डॉटर है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको अल्लाह खुशियाँ दे। शी इज़ ब्लेसिंग फॉर मी। अल्लाह ताला सबकी बेटियाँ ऐसे हो। बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन बेटे आपको पता है थोड़ा-सा बिज़ी इन देयर ओन लाइफ एंड एवरीथिंग, यू नो। सो एंड थिंग वाज़ माय सन, दैट टाइम ही वाज़ डूइंग हिज रेजिडेंसी व्हेन कोविड स्टार्ट हुआ, और एक और मेरे पे डिप्रेशन थी। आई कुडन्ट सी हिम फॉर 6-7 मंथ्स, और फिर मेरे डैड पास हुए, और ये 2-3 चीज़ें मुझे मोर एंग्री कोविड के लिए। सारी मेरी एंग्री कोविड के लिए थी कि ये क्या, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है हमारे साथ। सो वेरी टफ, वेरी टफ। बट बेशक आजमाइश अल्लाह ताला उतनी देता है, हमेशा हमें यही कहते हैं, आजमाइश उतनी देता है अल्लाह ताला जितना हम हैंडल कर सके। अल्लाह ताला कभी किसी को आजमाइश उसकी हिम्मत से ज़्यादा ना दे, नहीं, बिल्कुल हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। मदिया, आप बताइए, आपने कैसे डील किया विद दिस? कैसे मूव ऑन किया आफ्टर योर बेबीज डिमाइज? आई डोंट इवन नो व्हाट वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट विद यू। यू नो आई लाइक टू राइट, मगर इस चीज़ के लिए मेरे लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। आई फील लाइक जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, वेदर इट्स डेथ, डिमाइस, लॉस, मुझे लगता है कम है। It's not enough. इट्स नॉट इनफ। तो Yeah. आप मतलब आपने कैसे डील किया? आपने कैसे कोप किया? आपने कैसे मूव ऑन किया?
बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, वो हुई। बहुत सारे लोगों की फीडबैक, अहादीस, लोगों का कि वो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बना, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा, इस तरह की बातें। फिर कि हज़रत इब्राहिम के साथ होगा, और इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत सारी, सब मुझे मोटिवेट करते रहे। लेकिन जो इमीडिएट जो हमारी दो कुछ चीज़ें थी, उनमें मैं कहूँगी, मैंने 3 पॉइंटर्स जो इस स्पेशली इस फोरम के लिए जमा किए थे, वो मैं बताना शेयर करना शुरू करूँगी। कि सबसे पहले तो हमारे दूसरे बच्चे, मेरे 3 अदर किड्स थे उस टाइम पे, वो दे वर वेरी क्लोज विद द बेबी, एंड वी वांटेड देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एंड लॉस, एंड इट वाज रियली हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड इन दैट दोज 2 डेज, क्योंकि बहुत सडन एवरीथिंग हुई। अभी तो हम बेबी की खुशियां ही बटोर रहे थे कि उसके जाने का हो गया। तो इस सारे प्रोसेस में द हॉस्पिटल स्टाफ हैव बीन रियली सपोर्टिव अगेन। उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी टू वर्क विद अ डेथ काउंसलर, जिन्होंने बच्चों के जो मुश्किल सवालात, उनके कॉन्सेप्ट, उसमें उनकी हेल्प की पहले तो, एंड देन ऑल्सो शी डिड रियली स्वीट थिंग्स लाइक मेमोरियल एक्टिविटीज विद द किड्स, fingerprints of the baby. I cannot still imagine, like he was dead, like he was dead on his bed, and she was doing all those fingerprints with the baby hands and with my other kids for their memories, ke unki memory mein wo rahenge. She also made the thumbprint charms for us for the memory. That was the gifted thing from the hospital. And then she has casted his feet for our memory. I still have it in my lounge, and I just, whenever I see it, it just brings some sort of tears. I don't know if it's happy tears, sad tears, or whatever. It's just like those memories, beautiful things that still gives me, I don't know, I just feel happy seeing them. Those are just little memories. The second thing I would say, me and my husband, we have been like, we accepted the reality कि क्या हुआ, and we were like इस time पे rather than हम कमजोर पड़े, we have to do the right things, and उसमें था कि we wanted to perform all his last rituals ourselves. तो हमने उसको खुद अपने हाथों से गुसल दिया उसका last. It was the most hardest situation of all time. Seeing him, giving him bath at that time was hard. One of my husband friend arrived with the funeral director. He was there to support anyhow something happens, because seeing a baby not alive was a hard thing, and then giving him bath was the another hard thing. But we did it. We proudly did it. I was going through a lot of emotions at that time, and it was the time to let him go. So everything hereafter was a huge deal for me. Since he was the baby, so I wanted him to be amongst the other children. So जब उसका टाइम था कि हमने grave कौन सी उसके लिए, मतलब कहाँ उसको दफनाना है, that was, I was not able to let him go. And मुझे यही था कि उधर मैं नहीं होंगी तो कौन उसको संभालेगा. So I was like, maybe he could play with other kids. So we have chosen the place of the children grave side, जो उसके लिए स्पेशली हमने चूज की कि वो बच्चों के साथ रहे वहाँ पे भी. And then I remember on his funeral, Imam Shibli, a well-known person from ICG Masjid, उन्होंने उसका funeral जो है वो perform किया था. And he made a really encouraging dua and explained the aftermath when the baby goes back to his creator, which also helped me and my family as well, being peaceful that he is definitely at a much better place rather than being here in the world. एंड उन्होंने ये भी बताया कि हज़रत इब्राहीम और उनकी वाइफ जो हैं वो पर्सनली इन छोटे बच्चों के साथ जो यंग एज में चले जाते हैं उनके साथ खेल रहे होंगे, वक्त गुजार रहे होंगे. और फिर बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो जो भी होता है अल्लाह की मसलियत के तहत होता है, सब कुछ होता है, उस पर यकीन करते हुए हमने ये जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिली. दीज वर द इमीडिएट थिंग्स वी डिड. MashaAllah. So, I'm sorry if I'm misquoting a hadith, but I heard एक दफ़ा मुझे किसी ने बताया था. अब मेरी नॉलेज इस्लामिक लाइक जो भी है मेरे बड़े थोड़ी सी है, तो मैंने सुना था कि जो बच्चे इस तरह अर्ली मतलब बेबी चले के जाते टाइम पे चले जाते हैं तो उनके माँ बाप अपने माँ बाप के लिए वो जन्नत में इंतजार करते हैं. This is the gravity of that loss. यस. That आपकी इंसान जो भी है जैसा भी आप जन्नती बेशक हो जाते हैं because it's such a great loss. It You is. know?
So, subhanallah, I mean, I don't know if that even helps. I know as a parent who lost a child, I'm sure that doesn't justify anything. Insan kehte hai, I'd rather have my child Yes. back, you know, but Yes. it's something, you know, the reason why I keep saying these things is because I want us to be reminded. हम लोग अक्सर ये चीज़ें भूल जाते हैं, हमारे दिन में कितनी इन चीज़ों की एक explanation है, एक जिसे कहते हैं एक kind of solace है बिल्कुल. हमारे दिन में इनके Yeah. लिए. नुसरत आप बताइए. As I said earlier, बहुत social ramifications हैं आपकी loss की, and हमारी community में, हमारी South Asian community में especially कुछ चीज़ें हैं attached at the death of a spouse, especially a husband. Tell me, how did you deal with what happened? टू बी ऑनेस्टली, अगर देखा जाए, मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला वो दिन किसी को ना दिखाए कि जब यंग एज में आप विडो हो जाते हैं. सो हमारे जो कम्युनिटी वाले जो हैं और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस ही, अगर उससे देखा जाए तो किस तरह से वो आपको कमांड देते हैं कि ऐसे करो, ऐसा ना करो, और उस वक़्त आप इतने मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, स्केर्ड होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं कि अब क्या होगा आगे, राइट? क्योंकि जब आपका कोई यहाँ नहीं होता है ना, तो उस वक़्त पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है, कौन उस वक़्त आपको राइट वे में लेके जा रहा है, कौन आपको सही गाइड कर रहा है. सो बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त आई, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फैमिली मेंबर इधर कोई नहीं था, तो मेरी दोस्तों ने मुझे जो है मेरे इस्लामिक स्कूल में जब मेरी बेटी ने स्टार्ट किया था जाने के लिए, सो दैट टाइम जो है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने वहाँ पे. मैं नाम ज़रूर मेंशन करूँगी क्योंकि उनके बगैर मैं आई डोंट नो मैं कहाँ होती, अगर वो मुझे मेंटली सपोर्ट नहीं करते. कि क्योंकि आई एम टोटली जो है हाउसवाइफ थी मैं उस वक़्त. मुझे कुछ नहीं पता, ना बिल काटना आता था, हालाँकि ग्रेजुएट हूँ, सब कुछ हूँ मगर जब आप अपना देश छोड़ के परदेश में आते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है, प्रायोरिटी आपकी सबसे पहले आपका हस्बैंड और आपके बच्चे. बस आपको वो देखना और कुछ नहीं करना है. मगर अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड मुझे ऐसे मिले थे कि बस खाओ पियो ऐश करो, मज़े करो, किटी पार्टी करो, डोंट वरी अबाउट कि तुम्हें कुछ वर्क करना है, कुछ करना है. मैंने इतने कोर्सेज वहाँ से करके आई थी, यहाँ के बैंक में जॉब करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बट जब बच्चे हो गए तो सब भूल गए हम, कुछ भी नहीं, दोस्तों में आना जाना सब कुछ. सो जैसे जब मेरे हस्बैंड का हुआ उस वक़्त मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है. मैं रातों को सोती नहीं थी, मैं बैठे रहती थी, मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में बैठे रहती थी, मैं रात के 3-3 4-4 बजे घर आती थी. घर भी जाऊंगी तो क्या करूंगी, लगता है हस्बैंड वहां से आ रहे, उधर से निकल रहे हैं, सोफे पे बैठे हुए, बेडरूम में है. अपनी दोस्त के घर पे रुक गई, मेरे तीनों बच्चों को वो ले गई जब तक मम्मी नहीं आए पाकिस्तान से. वो ले गई करी एंड देन वो कहती बच्चों की फिक्र नहीं. मैं अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देख पाती थी क्योंकि मुझे था कि मुझे अपने हस्बैंड को ठीक करना है, कि वो बस. और सबसे बड़ी बात, उनके जैसे मैंने कहा था, उनके अंदर बच्चे उनके अंदर समाये हुए थे, उनकी जान बच्चों में थी. जब मैं बच्चों को लेके जाती थी, मैं बच्चों का नाम लेती थी, वो कोमा में थे, उनकी आंखों से आंसू निकलते थे. कि डॉक्टर ने कहा था उनके ब्रेन के अगर जैसे 4 हिस्से हैं तो 3 बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं. एक है जो वो सुन सकते हैं, और वो सुनते थे मेरे बच्चों की आवाज़ जिससे उनके आंसू आते थे. एंड देन उसके बाद जब आप इद्दत में होते हैं ना, तो इद्दत भी करनी होती है आपको, राइट? 4 महीने की इद्दत आपको करनी होती है. और उसमें आप, अगर आपका यहाँ कोई अपना नहीं है कमाने वाला, आपके घर में आपके भाई नहीं है, फादर नहीं है, बच्चे इतने बड़े नहीं है, सो आप किस तरह से फिर आप घर को चलाएंगे, राइट? आपको बिजनेस भी देखना है, आपको बच्चों को भी देखना है. तो बस बुर्का पहन लो, नकाब डाल लो, शाम से पहले 6 बजे, मगरिब से पहले पहले घर के अंदर आ जाओ, और मर्दों से बात नहीं करो, इधर नहीं देखो, उधर नहीं. मतलब ऐसी लाइफ हो गई थी. मैंने कहा सीरियसली ऐसे होता है? और हम किस कंट्री में रह रहे हैं, पहले तो ये अब मैं फील करती हूँ, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप हर चीज की आप पाबंदी करो, आप हर चीज को फॉलो करो कि हमारे इस्लाम में क्या है, वो चीजें करो. मगर आप, अगर आपको
पूरा ऐसे करके, और बहुत ही आपको उस तरह से बातें करना है तो बैक टू अवर कंट्री, राइट। ऐसी जगह पे आप जाके बैठ जाएं, फिर आप अमेरिका या कहीं पे और किसी कंट्री में नहीं जा सकते। तो बस मुझे ऐसे ही रहता था, मगर मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड जिन्होंने 4 डोमिनोज अपनी मेहनत से बनाए, 2 घर अपने मेहनत से बनाए, मगर सबसे पहले जब वो 95 में यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सबसे पहले स्टेशन में काम किया। उन्होंने पेपर की जॉब नहीं होती थी, जो पेपर बाहर रोड पे घरों के सामने पैटना शॉप राइट के जो फ्लायर बेचते थे वो करते थे। 4 डोमिनोज के होने के बावजूद उन्होंने वो जॉब नहीं छोड़ी, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ इस जॉब की वजह से हूँ, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। और मैंने वो काम, जब वो हॉस्पिटलाइज थे उस वक्त, वो काम रात के 2-2 बजे तक मैं घरों के बाहर पेपर फेंक के आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी, मेरे हस्बैंड चाहते थे कि जब तक कि उनकी जिंदगी है वो ये काम करें। जब उनकी जिंदगी खत्म हुई फिर जाहिर सी बात है बच्चों को देखना, सब कुछ करना। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें छोड़ी, मैंने डोमिनोज संभाले उनके। डोमिनोज संभालना इजी नहीं था एज अ हाउस वाइफ का, तो वो सब चीज़ देख के फिर उसको बेचना, सब कुछ करना, और जो घर में उनकी यादें थी तो वो तो मैं नहीं रह सकती, क्योंकि उसमें मेरा भी जिंदा रहना ही मुश्किल था। देन So, मैंने वो जो है फिर मैंने हटा के फिर अपनी लाइफ को थोड़ा ट्रैक पे लाया। मगर हाँ, जहाँ मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया, मैंने जैसे बोला था कि बुई है, आबिया है, कमल है, तस्लीम है, और सबसे बड़ी बात एक मैं बताऊंगी, आज के दौर में हमारे जो अक्सर इंडिया पाकिस्तान की जो चलते हैं हालात, उसमें भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम का जो चलता है, एक शख्स मेरे साथ 15 साल से खड़े रहे हैं, मैं नाम जरूर मेंशन करूंगी, संजीव एंड अस्मिता। क्योंकि मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब से जो है मेरे बच्चे ने एकदम देख के उनका हाथ जो यूं थामा, छोटे वाले ने कहा ही इज लुक लाइक माय फादर। तो बहुत बड़ी बात होती कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ आपने इतना खूबसूरत फ्रेंडशिप का रिश्ता रखा हुआ है, कि मतलब एक रिश्ता हमारा फ्रेंडशिप का ऐसा है कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा खानदान सबको पता है। मगर होते हैं ना कि थोड़े जो ओल्ड हमारे लोग होते हैं कि इनसे दोस्ती कर ली, उनसे दोस्ती कर ली, मगर अप्रिशिएट करते हैं कि किसी बेमकसद किसी गर्ज से एक फ्रेंडशिप हमारी आज तक रही है, दोस्ती हमारी सब कुछ है। और साथ में जो है ये सब चीजें मैंने किस तरह से हैंडल करके आज यहाँ पे पहुंची हूँ। आज मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, एक 21 साल की होने वाली माशाल्लाह से, बेटा 18 साल का, एक बेटा 17 साल का, और तीनों मेरे इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना एक चीज होती है ना, जैसे कि आपका जो हस्बैंड गया है, मेरा छोटा वाला सेम मेरे हस्बैंड की कॉपी है। आप देखो उसको तो लगेगा मेरा हस्बैंड चल के आ रहा सामने से, मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे हैं, पूरी कार्बन कॉपी जो है ना वही है वो मेरी। और आपका जैसे लॉस हुआ, आपका लॉस हुआ, आपने कहा आपने गुस्सा दिया अपने बच्चे को, यकीन माने मुझसे ज्यादा मेरी माँ को हर्ट हुआ है। क्यों? माँ ने भांजे के साथ मेरी शादी की, राइट, उनका फेवरेट भांजा इस दुनिया से चले गया, उसी में मैं इद्दत में रहते रहते मेरे फादर की डेथ हो गई, हार्ट, एंड देन मेरी मम्मी पाकिस्तान चले गई, मतलब उनके सामने हुआ। वो इद्दत में बैठी हुई है, मेरी मदर इन लॉ यानी कि मेरी खाला और मेरी सास जो भी थी, उनका इंतकाल हो गया। 8 महीने के अंदर मेरी मॉम ने 3 अपने क्लोज रिश्तों को, यानी कि मैंने अपने क्लोज रिश्ते को मैंने जाते हुए देखा। और जो गुस्ल की बात हुई, मैंने नेवर एवर अपनी लाइफ में कभी ना मैंने देखा कि सेमेट्री में कैसे उतारा जाता है, और ना ही मैंने कभी देखा गुस्ल कैसे देते। मैंने अपनी मदर इन लॉ को गुस्ल दिया, और मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं 4 रात तक मैं नहीं सोई हूँ कि मैंने गुस्सा दिया उनको। मतलब कि मैं एकदम ऐसी उसमें दुनिया में चले गई थी, शायद मैं वापस, मुझे किस तरह से लाया जा रहा था, मुझे लग रहा था मेरी सास वहां से आ रही है, मेरे अब्बू वहां से आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं। मतलब ऐसी चीजों से मैं 8 महीने के अंदर गुजरे।
Sorry, uh, मतलब no, I'm I cannot imagine like आप तीन मतलब I'm awed by आप लोगों की strength and just the fact that आप बात कर सकते हैं इस बारे में, especially नुज़ा जी आपका तो I mean आपका like I hear what you're saying. My mom, as I said, she went through the same, and you know I feel like जो आपका loss and the fact that आपने और I mean my mom included, like she was able to raise children and make them stand on their feet, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल, मेरी मम्मी की भी स्टोरी इस तरह की थी, वो कभी उन्होंने ज़िंदगी में जॉब नहीं की थी जब मेरे अब्बू हयात थे, so like I can imagine कि like आपके साथ क्या हुआ, but as somebody who saw somebody go through, I can't even imagine, even मैं अपने जैसे मैं बात की मेरी जेठानी की, like I can imagine that loss whatsoever. आप तीनों का लॉस इतना ग्रेट है, एंड इंसान मेरे आप देख रहे हैं लाइक मेरे लव्स कम पड़े, आई नो मुझे चूज किया गया स्पेनिक लिए, आई एम वेरी गुड विद वर्ड्स, मुझे बहुत लोगों ने कल कल तक बता रहे थे कि आई एम वेरी गुड विद माय वर्ड्स, मगर ये एक टॉपिक है जिसके लिए मेरे लव्स खत्म हो जाते हैं, बिकॉज मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसे दुख को इंसान लव्स में कैसे एक्सप्रेस करे. And I want final, like, our podcast is gonna end very soon. I want final thoughts from you guys. Like, as a community, what could you have wanted or desired from your friends? I know Nuzaji आपने काफी touch base किया, and I know Madhiya you did too. But I think अक्सर हम लोग ये चीज भूल जाते हैं. Unfortunately, I'm gonna say it as it is. In अब अक्सर ये हो गया है. अब जो जिस दौर में हम चल रहे हैं कि जब कोई फौत होता है, कुरान खानी पाकिस्तान में अक्सर 40वां भी करते हैं, इवेंट्स बन जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह. Yeah. And that's what it's come down to. Okay, like every other life event, and that is signed off with a date that you're meeting your friends. बिरयानी सर्व हो रही है, अक्सर ये भी बात होती है, मैंने मीम्स देखी हैं इसके बारे में कि उसकी फलां की वफात पे बिरयानी दी गई, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम. इस तरह की रियलिटी में हम अब जी रहे हैं. At a certain, if you think about it, empathy is true empathy is almost virtually non-existent. True. How did you deal in this world with such losses, where empathy is a dying human characteristic trait, frankly speaking? How did you guys deal? What could have anybody done to make your loss less, not lesser, but at least help you cope? कोई क्या कर सकता था आपको बेहतर मजीद फील कराने के लिए? So let's finish with that thought. Dolly? So माशाल्लाह मेरी community it's affect मेरे loss को बहुत ज़्यादा किया. I was blessed because of COVID was going on that time, and even in spite of that, all my friends came one by one, bringing food for weeks, praying in a mosque, and that was because that time I wasn't thinking what is going on, and but passage of time, of course, Allah Ta'ala itni deta hai, himmat deta hai, strong karta hai कि you start feeling better and everything. So my foggy thought became more clear मैंने जब उनको visit किया अपने parents की grave पे गई, then I felt a lot better. और फिर मैंने मेरे जो family members ने visit किया, especially my niece and nephews, they were coming every day. My friends, my community member, my American friends from my work, मेरे लिए फ्रूट भेज रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं. उन लोगों ने भी जैसे इन्होंने भी बताया कि नॉन मुस्लिम भी जो थे, they were very very loving that time too. So मुझे माशाल्लाह I blessed with the beautiful community and neighbors around me कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, आते रहे जाते रहे, even with the COVID, one by one प्लानिंग करके कि पहले कौन जाएगा कौन, ताकि ज़्यादा लोग ना इकट्ठे हों, ये ना हो वो. So माशाल्लाह everything, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, जिससे इंसान जो है ना वो आधा खड़ा हो जाता है. बिल्कुल. With your family, with your friends, so it's your biggest strength.
जो नेबर्स एंड जो फ्रेंड्स जो है ना, उनसे माशाल्लाह उनके साथ तो कहते हैं ना कि फैमिली मेंबर ही खाली नहीं होते, जो फ्रेंड्स होते हैं ना खून से ज्यादा उनके साथ रिश्ता बन जाता है। Yeah, exactly. बेशक। I know Nuzhat जी ने अपने फ्रेंड्स को भी साइट किया, like she actually call, gave him a shout out कि ये लोग थे जो मेरे साथ खड़े थे, and I know मुझे पहले भी बता रही थी कि अभी भी मैं उनको कॉल करूँ तो वो हाजिर है, वो भला जहाँ पे भी हो दुनिया के अंदर। And मदिहा आपके लिए like as I said, it's something that oftentimes I feel like अक्सर लोग आप जब किसी का बच्चा किसी इस तरह का लॉस होता है, अक्सर वो कहते हैं अल्लाह ताला की ये मर्जी थी, या तुम जैसे मैंने अभी कहा जन्नती हो गई हो तुम, तो आपको if there's something that you could have heard or somebody could have done beyond what they did at the hospital with the memorial, what could they have done? Please tell us. आई थिंक सबने बहुत पॉजिटिवली मेरी हेल्प की. I don't I'm not sure कि मैं मुझे क्या इसमें कहना चाहिए, but like they were doing whatever they were capable of. फ्रेंड्स थे, फैमिलीज थी, बच्चों के स्कूल से प्रिंसिपल टच नोट्स आ रहे हैं, उनके क्लास फेलोज लाइक स्मॉल नोट्स लिख के बेबी के लिए भेज रहे हैं. दे वर ऑल सर्टन थिंग्स लाइक दे वर ऑल टच्ड. आई थिंक आप एक चीज होती है कि कई दफा इमीडिएटली बहुत सारे लोग आपके पास आ जाते हैं और ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस उनको शायद वो रिलेट नहीं करते या उनको शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अभी तो सब जमा होंगे, बट असल प्रोसेस तब स्टार्ट होता है ग्रीफ का जब एवरीबडी इज लेफ्ट, the person is being buried, and now you as like the person, mother, wife, or even bacche like as a daughter Dolly ji hain, they are being left alone in the home. बच्चे अपने स्कूलों को चले गए हैं, हस्बैंड अगर हैं, फॉर इन माय केस हस्बैंड वाज बैक इन वर्क, आई वाज लेफ्ट अलोन एम्प्टी हैंडेड. आई हैड नोबडी. एंड उस टाइम पे कई दफा मुझे ये भी होता है कि आप इतना अपने आप को वीक जब दुनिया को दिखाते हो तो पीपल गेट बोर्ड एट सम पॉइंट. उनको आपको हर वक्त आप परेशान होकर नहीं दिखा सकते हो. आप बहुत क्लोज वन आपके होते हैं स्पेसिफिक, जिनके साथ आप शेयर कर लेते हो अपनी बहुत डीप डाउन की फीलिंग्स. इन ऑल द पॉजिटिविटी आई ऑल्सो हैव हैड माई ओन थॉट्स. मुझे एट सर्टन टाइम ये भी फील होता था कि कहीं अल्लाह मियाँ मुझसे नाराज तो नहीं कि इतनी प्यारी चीज़ दे के मुझसे ले ली, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं होगी. एंड इन दोज मोमेंट्स आई यूज टू पुट द पॉजिटिव थॉट्स कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, अल्लाह मियाँ के सबसे प्यारे नबी हैं, इंसान हैं इस दुनिया के, उनके 2 बेटे थे जिनकी डेथ हुई. तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को भी आजमाया है, तो ये यकीनन मेरे लिए आजमाइश है. लेकिन फरिश्ता नहीं हूँ मैं, हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते. थॉट्स आती हैं, जब आपसे कोई भी प्यारी चीज छिन जाए तो आप तिलमिला उठते हो. तो ये तो एक दिखता जागता इंसान था. तो उन दोज मोमेंट्स में आई यूज्ड टू प्रे अल्लाह मियाँ, लाइक आई यूज्ड टू बेग कि अल्लाह मियाँ प्लीज मुझे एक और बेबी दें. एंड thankfully he did give me another baby girl the next year. Last year she was born. She's the full of entertainment girl. She keeps me so busy. Alhamdulillah, I think I needed that type of support for my own self. कि कोई ऐसा हो जो मुझे उस चीज से निकाल सके कि I miss the person who's gone for any reasons. I cannot relate better or what, but we believe it's a better thing. एंड एक और चीज मैं अपने सिनेरियोस के हिसाब से बोलना चाहूंगी. आई नो द टॉपिक इज गोइंग वेरी लेंथी. कि keeping a certain stereotypes, we've been guided not to share much with the social workers of which we were provided from the hospital. जो कि मैं हमें was the really great help कि जो social worker होता है ना, वो they are the mental health professional who helps people solve their problems with their lives to make their lives better, and they can also help deal with the grief, can also help with the things like medical insurance and funeral things, everything. But I didn't know at that time बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी कि हम उनसे शेयर करेंगे तो कुछ निकल ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, क्योंकि दिस वाज अ चाइल्ड केस. Everybody knows it was a sudden infant death syndrome. So police was involved, other services were involved. That was the main thing कि जो हमारा भी fear factor था कि अब क्या होगा, दूसरे बच्चों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हम एक बड़े उसमें रहते हैं कि सोशल वर्कर्स हमें कहीं उसमें ना डाल दें कि परेशान ना हो या कुछ इस तरह से. उसमें मैं कहूँगी आई वाज नॉट एबल टू बी बेनिफिटेड माई सेल्फ फ्रॉम दिस कि मैं उनसे एडवाइस ले सकती या उनसे जान सकती कि मैं मेरे क्या स्टैंड्स हैं. बट आई वुड एडवाइस कि अगर किसी को सोशल वर्कर्स की
opportunity मिलती है avail करने की, they should always take the opportunity and discuss their concerns with them. So definitely I think that's one of it. Nuzhat ji, मैं आपको मैं आखिरी नोट दूंगी. तो I think that's one thing हमारी community के अंदर बहुत ज़्यादा एक kind of taboo समझा जाता है कि sometimes we do need that, you know, social work or frankly speaking, somebody is to speak to a professional, to a therapist even if we need to, especially just sudden loss होता है, an unexpected loss. उसके लिए it's very traumatic, you know. I was reading the other day that when you go through a trauma, you lose pata nahi kitni like cells that actually control your memory. And I was, this is why oftentimes अक्सर जो लोग एक अपनी अरूज पे जिसे कहते हैं बहुत capable, बहुत well spoken थे, एक point पे आके वो they speak, you know, in certain ways and you see like क्या हुआ, क्योंकि इस इंसान को कुछ हो गया. तो अक्सर इतनी ट्रोमैटिक और इतनी ट्रेजेडीज के हम लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर हम गो थ्रू करते हैं, एक दूसरे से तो दूर की, हम प्रोफेशनल तो दूर की बात, एक दूसरे से बात भी नहीं करते बिकॉज इट्स लाइक टैबू के अब तुम अल्लाह ताला की यू नो हिकमत को तुम सवाल उठा रहे हो. इट्स नॉट सवाल उठाना, आप किसके साथ डिस्कस करना चाह रहे हो टू मेक योरसेल्फ फील बेटर, एंड इट हेल्प्स डेफिनेटली टू हैव प्रोफेशनल्स लाइक दिस. एंड you know, so I think one of the things going forward in 2023, we do need to shake that taboo that you can seek out help and there's nothing wrong with that. We're Get human after all, you know. Get help and give help. Help and give, exactly. Get help and give help. Yeah. आप बताइए going forward. I mean, before, like, I personally feel your loss. As I said, I saw my mom go through that. You know, I'm seeing my other loved one go through that. तो मैं आप बताएं क्या कोई कुछ कर सकता था? I think हम लोग अक्सर साउथ एशियन जो हमारे क्या कहते हैं कल्चरल बिलीव्स हैं उसको अप्लाई करते थे. आप इद्दत की बात करी थी. You know, actually इद्दत के दौरान एक औरत काम कर सकती है अगर उसकी वजह से घर चल रहा है. एग्जैक्टली How many people know that? ये उस वक्त हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था. कि कोई आपको बताता नहीं है, but this is actually हमारे दीन में ये अलाउंस है. बिल्कुल. अगर आपके भाई, आपका बेटा और आपका अगर डैड यहाँ पे नहीं है, सो एक औरत ही है जो अपने घर को चलाती है. पता है, मैं आपको एक बात बताऊंगी सिस्टर अमरीन, जब मेरी बेटी ने दारुल रकम स्कूल में जब स्टार्ट किया था वहाँ पे, सो वहाँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के जिंदगी में रहते हुए उन्होंने जो है बेटी को जो है ना उसमें डाला था एंड कहा था कि इसको यहाँ से इंशाल्लाह हाफिज कुरान निकालेंगे इंशाल्लाह ताला. तो सडनली कुछ हम लोग ने करा, उसने स्टार्ट भी कर दिया था माशाल्लाह से और काफी सिपारे जो उसने हिफ्स भी कर लिए थे, सब कुछ कर लिए थे. वहां पे एक अच्छी चीज ये हुई थी, जैसे आपने भी कहा था कि ये स्कूल से जो है नोट आता था, करता था, इस तरह से उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया था. जो वहां पे इमाम थे वो एवरी डे मेरे आफ्टर मतलब कि आई थिंक दोपहर के टाइम में जो है वो हॉस्पिटल जाते थे, मेरे हस्बैंड के कान में अजान देते थे और जब वो अशहदुल्ला इलाहा बोलते थे तो मेरे हस्बैंड की शहादत की उंगली उठती थी, वो कोमा में थे. वो डॉक्टर्स जब वहां पे थे वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि गोरे हैं, जाहिर सी बात है कि ऐसा भी मौजज़ा हो सकता है. तो उसी वो फेथ लेके मैं उस वक्त में थी कि इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे. I'm so sorry, मैं आपको कट ऑफ करी, मुझे मैसेज आ रहा है कि हमारा बंद होने वाला है. तो एग्जैक्टली दिस इज द थिंग, आई थिंक इस तरह के लोगों की हमें जरूरत है हमारी कम्युनिटी के अंदर. दिस इज द मैसेज फॉर माय कम्युनिटी. Exactly. और इसी तरह जो ये हम लोग जब इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में जब हम लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं एक्टिव मेंबर हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में, सो इंडियन कम्युनिटी एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ही आजकल क्या मतलब कि जायसे मेरा जब एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद से वो लोग हर किसी को सपोर्ट करते हैं. अगर कुछ ऐसा होता है किसी के साथ भी, सो हम लोगों को यही चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, कि ना कि ये बोल दे ओके भाई अब तुम विडो हो गए हो, अब तुम घर में बैठो, अब जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए तुम निकलना नहीं, कुछ नहीं करना. ये चीजें हम लोगों को खत्म कर देनी है, क्योंकि जिस सेंचुरी में आजकल हम लोग हैं यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हमें जो है थोड़ा एडवांस होना है. एडवांस का मतलब ये नहीं कि बेबाक होके निकल जाना या कुछ कहीं भी, भला वो पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, हर जगह, like हर जगह. And I think that comes into like एक जिसे कहते हैं ना, एक अपनी एजुकेटेड माइंडसेट लाएं और एक दूसरे के लिए एम्पैथेटिक हो. आप एक दूसरे के लिए in person, emotionally, and even if it takes financially at times, Yes. you know, in the long run.
मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि उन्होंने जो है स्कूल वालों ने मुझे ऑलवेज जो भी होता था ना तो एनवलप में मुझे कुछ रख के देते थे कि सिस्टर की हेल्प हो जाए, और खुदा इस बात का गवाह है, ऑलवेज मैं लिफाफा उनके हाथ में ऐसे रखती थी। मैंने कहा जज़ाकल्लाह खैर, मुझसे ज्यादा कोई और मुस्तहिक है, आप उनको दीजिएगा, माशाल्लाह। और कि अब आप उनको दीजिए। तो ये होता था। और बाज दफा तो लोग बोलते थे ओ पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। Yeah, that's a typical. That's और आज मैंने अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बनाई है, शुक्र है। Mashallah, mashallah. So on that note, Jazakallah khairan, everyone, for sharing us, sharing with us your stories, and Jazakallah khairan to everyone watching. And I hope on that note, thank you very much, Beenish. that is right. Let us express our feeling, Exactly. I'm at a loss for words. listening to beautiful people. थैंक यू सो मच, Thank you थैंक so यू much. एवरीवन, थैंक यू। और प्लीज अपना अपना सब ख्याल रखिएगा। Inshallah.